Hello children, welcome back and like in this video we'll be starting economics chapter 2 national income accounting. As we know यहाँ से आपका मार्क्स का जो वेटेज है काफ़ी होता है and you must prepare this chapter well. इसमें थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स भी हैं, दैट इज़ यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 न्यूमेरिकल्स इन द एग्ज़ाम, तो वो सारे प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियोस में एंड देखते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है फॉर योर एग्जाम्स दैट यू मस्ट रिवाइज, तो उसकी बात करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले देखते हैं गुड्स के बारे में। हम लोग जानते हैं गुड्स मतलब सामान, सिंपल, बट इन इकोनॉमिक्स ऑल दोज tangible or intangible things which can satisfy human wants are called goods. तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाता है कि all those things which can satisfy human wants are called goods. Very simple, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है एंड आपके सिलेबस में बेसिकली there are 2 types of goods given. One is final good, the other is intermediate goods. And again final goods are divided into 2 types, consumption goods, capital goods. तो टोटल यहाँ पे मिला के हो गए 4 गुड्स। इसके भी अगेन सब डिवीजन है जो मैं आपको बताऊंगा 1 by 1। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फाइनल गुड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं फाइनल गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स, आई मीन दे आर रेडी टू यूज। एंड जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं दे आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इनकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। फाइनल गुड्स के पहले स्टार्ट करते हैं। दोज गुड्स विच आर मेंट फॉर फाइनल यूज एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइनल गुड। तो वो सारे गुड्स जो और उनका प्रोडक्शन नहीं हो सकता, दे आर कॉल्ड फाइनल गुड्स, आई मीन उसको हमें कंज्यूम करना है। एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर रीसेल और they will help in the production of some other goods. तो बेसिकली उसको हम लोग प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, सो दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सो लाइक दिस फाइनल गुड्स के बारे में कुछ एक और फीचर्स हैं, लाइक दे आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, दिस गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। एंड इनकी अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो पेन, पेपर, कंप्यूटर, मोबाइल, ऑटोमोबाइल्स, कार्स, सो लाइक दैट बहुत सारे गुड्स हैं। एंड इंटरमीडिएट गुड्स की बात करेंगे, दे आर नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम। सो दिस पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर्ड। एंड सम एग्जाम्पल्स, कभी कभी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू में मिल जाता है कि टू रिकॉग्नाइज वेदर इट इज़ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स। तो जैसे शुगर है, सो शुगर व्हेन वी कंज्यूम शुगर फॉर अस दैट इज ए फाइनल गुड, बट व्हेन शुगर इज कंज्यूम्ड बाय अ स्वीट मेकर और अ स्वीट शॉप, तो वो वहाँ पे हो गया उसका इंटरमीडिएट गुड्स। लाइक दैट मोबाइल सेट्स which are purchased by us, that is final good, but the same mobile sets when they are purchased by say a mobile shopkeeper or a mobile trader, तो वो उसके लिए हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे लिए फाइनल गुड है वो किसी और के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। सो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, I mean crystal clear. Okay. Just now I was telling you about कि final goods are again subdivided into 2 types, consumption goods and capital goods. Now what are these consumption goods? Let's see few characteristics of this. These goods are directly consumed by consumers, I mean us. These goods are generally cheaper in comparison to capital goods. These goods have a shorter life, इनकी लाइफ छोटी होती है, पेरिशेबल, जनरली पेरिशेबल इन नेचर होते हैं। एंड जो कैपिटल गुड्स होती है उनकी लॉन्गर लाइफ होती है। एंड दिस गुड्स आर मेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, देन दे आर बिट एक्सपेंसिव, लाइक मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, तो ये कुछ एक्सपेंसिव गुड्स हैं। तो कैपिटल गुड्स, आई मीन दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स।
तो उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स ही आएंगी, सो दे आर ऑल कैपिटल गुड्स। अगेन हम लोग कंजप्शन गुड्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, नॉट टू, थ्री टाइप्स, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज। नाउ व्हाट आर दिस ड्यूरेबल गुड्स? एज द नेम implies, the goods which can be used again and again for a certain period of time are called consumer goods, I mean consumer durable goods or consumer durables in simple words, like pen, pencil. We can use these goods again and again. Whereas non-durable, they are just opposite of durable goods. They can only be used once. Okay, so they are generally perishable in nature. So use and throw. That's the thing. And about services, these are intangible. You cannot see, you cannot move, you cannot touch. So, but again, we need services of doctors, we need services of teachers, lawyers. So there are so many, types of individuals whose services are required. So these are three different parts, I mean types of consumption goods, right? Okay. Sorry. One difference that you must learn for the exam, and that is the difference between stock and flow. Now what is stock? What is flow? Let's try to understand. A stock is measured at a particular point of time, whereas a flow is measured over a period of time. Stock is a static concept, but flow is a dynamic concept. So चीज़ यहीं से समझ में आ जाती है कि when we calculate the value of a good on one particular date, so that is called stock. But when we calculate actually stock and flow both are variables in economics. So when we find the value of a good or services during the during a period of time, so that is called flow. Like very simple, that India's population as on 31st December 2023. So on that particular date we are finding the population of India, so that is called a stock. But suppose when you are asked to find the population, the increase in the population during the whole year 2023, so that becomes a flow. So like we can take other examples from NCERT book also, where like वाटर टैंक का एग्जाम्पल दिया है कि वाटर टैंक एक पर्टिकुलर टाइम या फिर एक पर्टिकुलर डेट पे उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, एंड मान लो आपने पंप अगर 1-2 घंटा चलाया तो पानी कितना फ्लो हुआ उसके अंदर, कितना भर्ती हुआ है, तो that becomes a flow. So like this. Okay, I hope you have understood this stock and flow. The next concept is gross investment. Now what is this? Any addition to the capital stock of an economy is known as gross investment. For example, purchase of fixed assets like building machinery, etc. And we when we all the investment, different types of investment in capital goods. कोई भी capital goods में अगर हम लोग invest करते हैं, that is called gross investment. And इस gross investment से अगर if we deduct depreciation, we get net investment. तो बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है for short question. Next concept है depreciation का. We have studied in class 11 also that depreciation is the decrease in the value of fixed assets due to wear and tear. When we use fixed assets, so its value gets decreased day by day or month by month or year by year, and that is called depreciation. And it is basically an accounting concept and is shown as a charge, as an expense in the profit and loss account debit side. Okay, and the depreciation can take place due to three reasons. The first one, normal wear and tear in the goods, I mean normal uses of the goods. Number two, with the passage of time, the asset become obsolete. देखा होगा कि आउट ऑफ फैशन में अगर हो जाती है कोई चीज़, सो दैट बिकम्स ऑब्सोलेट बोलते हैं उसको, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है. देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ दैट. एंड एक और है दैट इज ऑब्सोलेंस, एंड दैट इज द लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू चेंज इन डिमांड और टेक्नोलॉजी.
तो ये ड्यू टू दिस थ्री रीजंस जनरली डेप्रिसिएशन अकर्स। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ये भी इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, लेट्स ट्राई टू डिस्टिंग्विश देम एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रियल फ्लो, it is the flow of goods and services between firms and households. When we talk about money flow, it is the flow of money between firms and households. So here actually money moves from firms to households or vice versa. And in real flow what happens? Goods or services flow from one sector to another. There are four sectors. So like this, and real flow is also known as physical flow. I mean, tangible or intangible flow, where goods or services are, transferred from one individual to another. But money flow is known as nominal flow. Okay, and in real flow there is an exchange of goods and services, but in money flow it involves exchange of money. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सिंपल है, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, मनी फ्लो के अंदर मनी का फ्लो होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एंड इन योर सिलेबस इट इज गिवन फॉर द सिंपल इकोनॉमी कि एक सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरीके से हाउ इट हैपन्स। सो सबसे पहले तो आपको समझना है कि व्हाट इज सिंपल इकोनॉमी। बेसिकली सिंपल इकोनॉमी इज द वन वेयर देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, वन इज अ फर्म, द अदर इज हाउस होल्ड। एक प्रोड्यूसर है, दूसरा कंज्यूमर है। देयर इज नो गवर्नमेंट एंड द हाउस होल्ड, आई मीन कंज्यूमर्स, दे डू नॉट पे एनी टैक्सेस, देयर इज नो फॉरेन ट्रेड, देयर इज नो लीकेज इन द सिस्टम। आई मीन there is no difference between the amount of factor payment and the sales revenue. मतलब यहाँ पे ये assume करना पड़ता है कि जितना भी हम लोग factor payment करते हैं and in return the factors they use all the money. I mean they use all the money to consume goods and services. They do not save any type of money. ये assumptions हैं एक simple economy का। ओके चिल्ड्रन, आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एंड समझते हैं कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। एंड लेट्स सी द मीनिंग। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स एंड बैक टू द हाउस होल्ड इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। As we know कि friends, everything in this world moves in circle. हर चीज़ दुनिया में गोल गोल घूमती है, तो why not money? So money also moves in a circular way and that is called circular flow of income. Now basically यहाँ पे आपको assume करना है when you will try to define circular flow, आपको assume करना है कि there are only two sectors in an economy, firm and households. That means the economy is a simple economy. Then only we can explain this concept. So some other points that you can write here. The household render factor services, as we know, to the firms, and in return they get wages and salaries by the firms. Now again, the income received by the factors of production, they use that income to consume goods and services which are again manufactured by the firms. So in this way, whatever the money they receive, that goes back to the firms. So this is called circular flow of income. We earn money to spend. There is no leakage in the system. Okay, and one formula that you can write here, that is aggregate expenditure by the household is equal to aggregate revenue received by the firm, right? So this you can write. Now you can see on your screen that a flow chart, and you must understand, you must try to practice these diagrams. You must ध्यान में रखना है कि कौन सी एरो
किस तरफ घूम रही है एंड हाउ इट मूव्स, और इसको ठीक से लेबलिंग करना है. नाउ एज यू कैन सी इन द डायग्राम, द अपर मोस्ट एरो गोइंग फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स which represents spending by the household. The second arrow going from the firms to the household, that shows that the goods and services which are flowing from firms to the households. The lowermost arrow going from household to the firm shows that factor services are provided, and the arrow above this going from firms to household represents the factor payments made by firms to the household for their services. So this is how it works. You can also see that there are 3 points in the diagram: point A, point B and point C. Point A, like basically we can find out national income by using this diagram. So this point denotes the the way by which we can calculate national income, which we will be studying in the next video. So point A, it shows the total expenditure done by the household on goods and services during a year, and this is called the expenditure method of calculating national income. Point B shows the aggregate value of final goods and services produced by all the firms in an economy during a given year, and this is called product method or value added method. And point C shows the total factor payments made by the firms. So this is called income method. So like this, these are the 3 ways or methods by which we can calculate national income. So my dear friends, this is the first part of national income, and in the next video, that is part 2 video, I will be explaining how to calculate national income using different methods, and we will also work out the different numericals along with that. Thank you very much for watching this video. See you in the next video. Till then, goodbye.